National Education Policy 2020, a major reform in education of India after almost 34 years. I know you all have read about it and have basic knowledge of it, but in this video I am going to tell you about all the vocabulary and terms related to this policy. So, without any further delay, let's start learning all the vocabulary and English terms related to national education policy. And you are free to write about your views on this national education policy in the comment section. Now, let's start. Policy. Policy is a blueprint of the organizational activities which are repetitive in nature. In Hindi, policy is नीति और कार्य योजना. Before implementing any work, it is planned. So, policy is planned by the government for school education and higher education of our upcoming young generation. Okay, now moving further, let's learn new vocabs. Reforms. As I said earlier, a major reform in education of India. Reforms means improvement or sudhar that has been implemented in our national education policy. Now, NEP, that is National Education Policy 2020, is ambitious, forward looking, holistic, flexible, multidisciplinary. These adjectives are given to National Education Policy. You all have read about it. So now let's learn its meaning also. Ambitious, that is in Hindi, Mahatvakanshi. Having a strong desire to be successful. If you relate it to NEP, that means our national education policy is ambitious and it is going to be successful in future. Now, forward looking, that means future देख रहा है and it is planned according to the future that how it can help in future. Thinking about or planning about future. Okay, मतलब आगे future को देख के इसे plan किया गया है. Now holistic, that is means considered as a whole thing, मतलब according ये सबको consider करते पूरी चीज़ को लेते. For example आप देख सकते हैं 360 डिग्री holistic report card means एक ऐसी report card बनाएगी जिसमें academic, practical और co-curricular के सारे marks ऐड किए जाएंगे. Now flexible, that means changeable, मतलब अगर इसमें कोई changement चाहिए रहेगी आगे चल के तो वो आसानी से बहुत ईजिली हो जाएगी. नो मल्टीडिसिप्लिनरी, कनेक्टेड विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड. वोकेशनल, ये वर्ड तो आपने ज़रूर सुना होगा. वोकेशनल स्किल्स कनेक्टेड विद द स्किल्स एंड नॉलेज, नॉट ओनली डिपेंडिंग अपॉन द बुकिश नॉलेज, दे कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट ऑन देयर हॉबीज एंड स्किल्स फॉर द स्टूडेंट्स. Gross domestic product, that means total values of goods produced and services provided in a country during a year. कंट्री में गुड्स और सर्विसेज से जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल बी इंक्रीज फ्रॉम 4.3% to 6%. पहले 4.3% था एजुकेशन में, अब 6% कर दिया जाएगा. नाउ GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो. Gross means total. Okay, total. Gross enrollment ratio should be increased from 26.3% to 50% by 2035. That is means after 15 years the ratio should be increased. Now SDG, Sustainable Development Goal, a program passed by the United Nations General Assembly where 193 countries have promised that they will try to achieve 17 goals given in the Sustainable Development Goal by 2030. Now with reference to our national education policy, we can connect it to the SDG 4 where we are talking about is quality education. Now, a national education policy is related to SDG 4, that is quality education. Now moving further. Literacy, that means ability to read and write. ओके ये मान तो सबको ही पता होगा, बट लिटरेसी एंड लिटरेट में कंफ्यूजन हो जाती है तो अब से नहीं रहेगी. लिटरेसी मीन्स टू एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड लिटरेट मीन्स एबल टू राइड एंड राइट. वो जो एबल होता है पढ़ने और लिखने के लिए उसको लिटरेट कहते हैं, उस एबिलिटी को हम लिटरेसी कहते हैं. नाउ न्यूमरेसी,
हैविंग गुड बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके पास मैथमेटिक्स को लेके एक बेसिक अच्छी सी नॉलेज होती है उसको हम न्यूमरेसी कहते हैं. इट कैन रिलेट टू द नंबर्स ऑल्सो. ओके ना, आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्लियर हो गए होंगे. तो अब आगे बढ़ते हैं. कोडिंग, ये नया ऐड किया गया है कि अब से बच्चों को कोडिंग भी सिखाई जाएगी एंड इट इज़ ऑलरेडी बीइंग प्रैक्टिस्ड इन चाइना. इससे क्या होगा, बच्चे टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर सकेंगे. Now moving further, linguistic skill. That means connected with language or study of language. बच्चों को अब linguistic skills भी दी जाएंगी. Linguistic means connected with language or study of language. भाषा, भाषा से connected और उसकी पढ़ाई भी होगी. Now curriculum. That means all the subjects that are taught in school, colleges and universities. You can say in Hindi पाठ्यक्रम. करिकुलम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम. सारे सब्जेक्ट्स जो स्कूल में या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं. नाउ एक्स्ट्रा करिकुलर, स्किल डेवलपमेंट स्टडीज़ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ थ्रू बुक्स. एक्स्ट्रा करिकुलर में वो चीज़ें आ जाती हैं बुक्स को साइड करके जो उनको डेवलप करने में हेल्प करेंगी, उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर कहते हैं. A regulatory body is a government organization that is to exercise a regulatory function. रेगुलेटरी बॉडी डैट इज़ नियामक संस्था जो गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक पार्टिकुलर एरिया को संभालती है एंड उसके सारे प्रोग्राम्स करती है. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और एचआरडी मिनिस्टर और मानव संसाधन मिनिस्ट्री, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री को कहा जाता था बट अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कही जाएगी. Now moving further. Fee cap, a limit on the total fee paid regardless of performance. ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में फ़ी लिमिट कर दी जाएगी एंड दैट फ़ी कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर. वो आगे फ़ी एक्सटेंड नहीं की जा सकती है. नाउ इट इज़ ऑल्सो सेड इन द पॉलिसी दैट द बुक्स from grade 1 to 5 should be in regional language, local language for the better understanding of the students. Now I also think it's good for the students that they can understand their study in their regional language and they will not suffer from any difficulty. This it is already being practiced in Europe. Now it will raise a debate among Hindi medium and English medium, but it will be better for students. But I want to say that English will remain the language of global mass. Okay, so we should learn English for further because it gives us a lot of opportunity. So that's all from today's video. If you learn from this video, please hit the like button. अगर आपको कोई suggestion देना है then you're free to give in comment section. So thank you so much for watching. Please अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा.